Good morning, students. So, today we are going to read the second prose, that is Old Man at the Bridge. And this is a very simple prose, easy, not so very difficult or complex. But you have to focus in each and every line to understand what is happening in the prose. Okay, so in the very first paragraph, first I'll tell you the background of the prose. So just imagine there is a war going on and there is an alarming situation, and everybody is running here and there to save themselves. Okay, so this is the background and this is the setting of the prose. Okay, so I'll give you all the details about the themes and the setting, the background, but first of all we have to read the prose, then only you will understand the notes. Okay, so in the very first paragraph there is the use of imagery, and you have to imagine the situation that is happening in this paragraph. Okay, so an old man with steel rimmed spectacles. Okay, एक ओल्ड मैन है who is wearing a steel rimmed, okay, rim means होता है spectacles के frame. Okay, the frame of the spectacle is known as rimmed. So the that is a steel rimmed spectacles and very dusty clothes. He was wearing very dusty clothes, sat by the side of the road. Who was sitting by the side of the road? Okay, so there was a pontoon bridge. Now what is the meaning of pontoon? Pontoon means temporary. Temporary bridge कहाँ बनाया गया था? Across the river. Okay, when we use the wooden racks or the small ships or boats and connect them to make a bridge that is temporary, that is known as pontoon bridge. Okay, that is made across the river, and carts, trucks and men, women, children were crossing it. As in, it was an alarming situation, everybody was running here and there, so they were running across the bridge to save themselves. What were they? The carts, the trucks, men, women and children. Okay, so the mule-drawn carts staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. Now you have to imagine this situation. The mule-drawn carts means mule means ऑफस्प्रिंग ऑफ डोंकी और हॉर्स. ओके, मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं डोंकी और हॉर्स के, दे वे पुलिंग द कार्ट्स. ओके, एंड द कार्ट्स वे स्टैगरिंग. स्टैगरिंग मीन्स मूविंग विद डिफिकल्टी. ओके, जैसे रास्ता खराब होता है तो दे वेर अनेबल टू मूव स्मूथली. ओके, सो दे वे स्टैगरिंग अप द स्टीप बैंक. नाउ यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ स्टीप, इंक्लाइंड बैंक. ओके, वो बैंक स्लोप था उसमें, जिसपे स्लोप के ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी. ओके, so from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. Now there were soldiers, as in war was going on, so they were helping people to hide here and there. Okay, so the soldiers were helping to push the cart. Okay, they were pushing the carts against the spokes of the wheels so that it can move forward. Okay, so the trucks ground up and away, heading out of it. All the peasants plodded along in the ankle deep dust. Now जो वहाँ पे ट्रक्स आ रहे थे, ठीक है, ट्रक्स में कौन थे? एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट. जैसे ही ट्रक्स रुक रहे थे, ग्राउंड अप मीन्स रुकना, व्हेन दे स्टॉप्ड, तो उसमें से कौन हेड आउट हो रहे थे? द पीजेंट्स, जो वहाँ पे काम करते हैं, जो डेली वेजेस कमाते हैं. ओके, यू कैन से द फार्मर्स एंड ऑल. ओके, or daily wages workers. So they plodded means they walked slowly and heavily. Okay, जब हम लोग heavy step, जो बहुत थक जाता है इंसान, तो they put heavy steps. Okay, along with the ankle deep dust, they were working, so their ankle were deep in dust. Okay, but the old man sat there. इतना कुछ हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग खुद को हाइड करें, but the old man was sitting there without moving. Why he was not moving? Because he was too tired to go any farther. वो बहुत ज़्यादा थक चुका था कि वो मूव कर सके. Okay, so this is the introduction part and this is the imagery part. I hope it is clear to you. Now next paragraph says
it was my business to cross the bridge. Now who is saying my? The narrator, okay, the author of the story, that is Ernest Hemingway. Okay, he was saying that it was my business to cross the bridge, explore the bridgehead. उसका क्या काम था, उसको क्या काम दिया गया था नैरेटर को? टू एक्सप्लोर द ब्रिज हेड. ब्रिज हेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी जहाँ से आप एनिमी कहाँ तक पहुँचे हैं ना उसको आप देख सकते हो. ठीक है, तो ब्रिज हेड के बियॉन्ड जाना था और वहाँ से क्या करना था? फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, कि एनिमी कहाँ तक पहुँच चुके हैं. ठीक है, सो ब्रिज हेड इज़ द प्लेस जहाँ तक उसको जा करके इस बात का पता लगाना था. दिस वॉज द बिजनेस ऑफ द नैरेटर. दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज. सो ही वॉज डूइंग दैट. वो वहाँ जा रहा था और चेक कर रहा था कि कहाँ तक, मतलब होता है ना कि जहाँ तक पहुँचे, आई विल गिव यू द सिग्नल. ओके, कि यहाँ तक पहुँच गए हैं और दे वर अबाउट टू एक्ट ऑन आस, ऐसा कुछ. ठीक है, सो आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज. वो ये किया और रिटर्न हुआ, वापस आया. सो देयर वर नॉट सो मेनी कार्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर. जब वो जा रहा था तो कहाँ जा रहा था? ब्रिज हेड की तरफ जा रहा था. देन दिस वॉज द सिचुएशन. देयर वर मैनी कार्स, मैनी पीपल गोइंग हियर एंड देयर, बट सब बहुत जल्दी में थे. तो जब तक वो वापस आए तब तक सब जा चुके थे. सो देयर वर नॉट सो मेनी कार्स, देयर वर फ्यू कार्स लेफ्ट एंड फ्यू पीपल लेफ्ट ऑन फुट बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर. वो जब जा रहा था तभी भी उसने ओल्ड मैन को वहीं बैठे देखा और जब वो वापस आया स्टिल द ओल्ड मैन वॉज देयर. ओके, सो नाउ where do you come from, he asked. Okay, who asked? The narrator. Okay, from San Carlos, he said and smiled. Okay, so he was being kind to him. Okay, उसको देखकर, उस old man को देखकर उस soldier को दया आ गई. तो he said that I am from San Carlos. Okay, so that was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. as in जब आप बहुत अकेले होते हो तब अगर आपको कोई उस जगह के बारे में पूछे जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, then you feel happy. Okay, you feel pleasured. So that is why the old man was feeling pleasure that somebody is caring about me, somebody asked me that from where I belong, so he felt happy. Okay, so I was taking care of animals, he explained. Okay, now he was explaining that I was at San Carlos and was taking care of animals. So he was a little amazed. The narrator was a little amazed. Oh, I said, not quite understanding. Means at this time in this alarming situation लोग अपने अपनों को तक छोड़ के चले जाते हैं, but he has feeling of his animals. Okay, he was taking care of his animals. This is the main essence and main theme of the poem, that means feeling matters, whether the feeling is for a human being or for animals. Okay, so now the old man replied, yes, he said, I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. Now he is saying that I wanted to stay there, I was taking care, and I was the last one who left my place San Carlos. He did not look like a shepherd. वो कोई shepherd की तरह भी नहीं लग रहा था, nor a herdsman. Okay, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face. This is the appearance of that old man, okay, who is wearing the black dusty clothes and his face was grey and dusty. Okay, and his steel rimmed spectacles, and said, what animals were they? He was just looking at his face and asked कि वो कौन से जानवर थे आपके पास. ओके, नाउ ही इज़ बिकम अ लिटिल फ्रेंडली टू हिम, क्योंकि उसको उस पर बहुत दया आ रही थी, दैट ही इज़ सो वेरी अलोन, नॉट एबल टू वॉक एंड नोबडी इज़ देयर फॉर हेल्पिंग हिम. ओके, सो ही सेड, वेरियस एनिमल्स, he said, and shook his head. I had to leave them. अब ये बहुत दुखी होकर, जैसे हम लोग ऐसे कहते हैं, मेरे को उस जगह को छोड़ना पड़ा, मेरे एनिमल्स को छोड़ना पड़ा. तो ही वॉज वेरी सैड एंड सैडली ही सेड दैट आई हैड टू लीव देम. ओके, नाउ he says, I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro
delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy. अब वो उससे बात भी कर रहा है narrator, and narrator was watching that, as in it was his business to see कि कहाँ तक पहुँचे. तो वो क्या कर रहा है, was watching the bridge की तरफ देख रहा है, and the African looking country of the Ebro Delta is a river, okay, जिसको पार करके वो उसके enemy आ रहे हैं. और क्या वंडर कर रहा है, वो सोच रहा है कि how long now it would be before we would see the enemy, कि अब और कितनी देर बाद हम लोग अपने एनिमी को देखेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही वॉज इन अ वॉर. ओके, इससे पहले उसने कभी वॉर नहीं किया था, तो ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड अबाउट कैसे करते हैं, क्या करते हैं. ओके, एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नॉइजेज दैट वुड सिग्नल द, और वो ना बस सुन रहा है, आवाज़ को नोटिस कर रहा है कि कभी भी वो फर्स्ट नॉइज़ आ सकती है जो सिग्नल देगी दैट एवर मिस्टीरियस इवेंट कॉल्ड कॉन्टैक्ट. क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस्ड है, तो इसके लिए ये एवर मिस्टीरियस इवेंट है, बिकॉज ही हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस, सो दिस इज मिस्टीरियस टू हिम. सो ही इज सेइंग दैट कि कभी भी वो आवाज़ आ सकती है जिससे मेरा पहली बार फर्स्ट कॉन्टैक्ट होगा, किससे, किसी वॉर से, कि एनिमी आ रहे हैं और उनसे लड़ना है. ओके, एंड द ओल्ड मैन स्टिल सैट देयर. ही वॉज डूइंग ऑल दिस एंड लिसनिंग टू द ओल्ड मैन ऑल्सो एंड लिसनिंग टू द नॉइजेज ऑल्सो, एंड बट द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग स्टिल देयर. ओके, सो नाउ ही आस्क्ड what animals were they, कौन से जानवर थे. so he is answering there were 3 animals altogether. he explained there was 2 goats and a cat and there were 4 pairs of pigeons. now you have to remember this कि उसके पास कौन से जानवर थे, because this is the use of the metaphor here. okay, इस जानवर के थ्रू, the animals के थ्रू, the author is expressing about the metaphor, and I'll let you know what are the metaphor. These are the symbols used in the prose, and you had to leave them, I asked. okay, so he said this, yes, because of the artillery means top. okay, the captain told me to go because of the artillery. okay, so he is saying that yes, I have to leave because of the artillery going on there. okay, so he is now asking, the narrator is asking that, and you have no family, he asked the old man. okay, so I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. now ये उससे पूछ रहा है और ब्रिज के एंड की तरफ देख रहा है जहाँ पे कुछ ही few carts बचे हुए हैं जो कि जल्दी जल्दी जा रहे हैं. कहाँ से, स्लोप ऑफ द बैंक से. ओके, सो नाउ ओल्ड मैन रिप्लाइड, नो, ही सेड, ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड. नाउ ही इज सेइंग दैट द एनिमल्स इज हिज फैमिली. ओके, सो नाउ ही इज सेइंग द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट. ओके, नाउ cat is used as a metaphor here for the people who are young, okay, who are youthful, कि and who are clever and as swift as cat. जो people जो वॉर पे है, जो स्विफ्ट है, जो फास्ट है, कि उसको अपने एनिमल्स की चिंता है कि वो एनिमल्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे, एज इन हमको उनको छोड़ के आना पड़ा अकेले. ठीक है, तो ही इज सेइंग दैट कि कैट्स जो है वो तो खुद को संभाल लेंगी. ओके, बिकॉज कैट्स आर स्विफ्ट, कैट्स आर क्लेवर, कैट्स आर स्मार्ट, कि वो कैसे बचेंगी. मतलब यहाँ पे मेटाफर यूज़ हो रहा है कि जो यंग पीपल हैं, जो क्लेवर पीपल है, हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर, दे आर एबल टू कीप देम सेफ. okay, because they are smart, they are clever. okay, and a cat can look out of itself. okay, so the young and youthful people and clever people can look out of at themselves, but I cannot think what will become of the others. now अब ये बोल रहा है कि जो पिजन्स है और जो गोट्स है वो क्या करेंगी अपना, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो गोट्स है, गोट्स आर कंपेयर्ड टू व्हाट, goats are compared to the weak people, क्योंकि goats are not able to run fast. okay, and goats are not that smart. okay, so goats कैसे खुद को बचा पाएंगे, तो goats are compared to the old people. okay, to the weak people. हो सकता है कुछ लोग बीमार हैं, जो लोग वॉर पे पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है जिनको. ओके, एंड द पिजन्स आर कंपेयर्ड, कि कुछ लोग होते हैं जो पिजन्स की तरह उड़ सकते हैं, मतलब दे आर केपेबल टू सेव देमसेल्फ, बट द सिचुएशन, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि वो खुद को चाह कर भी सेफ नहीं कर पाते, तो पिजन्स आर कंपेयर्ड टू दैट पीपल. ओके, सो नाउ ही इज सेइंग, व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड. ओके, सॉरी, where were we? okay, and the last few cards. okay,
Yes. So now he is asking that there is a war. So there are two parties, that are nationalist party and Republican party. अगर वॉर हो रहा है तो दो पार्टी के बीच में ही वॉर होगा, लेकिन ये एक सिविल वॉर हो रहा है, सिविलियन वॉर. ओके. और सिविलियन वॉर का मतलब होता है जो वॉर अपने ही देश के अंदर होता है, टू स्टेट्स के बीच में वॉर हो रहा है. ठीक है. तो ये स्पेन में वॉर हो रहा है. तो जो मोस्ट स्पेनिश पीपल वे डिवाइडेड इनटू टू पार्टीज, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है. तो वो इससे पूछ रहा है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं. व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड. ओके. सो ही इज रिप्लाइंग आई एम विदाउट पॉलिटिक्स. वो बोल रहा है मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है. आई एम सीरियसली पार्टिसिपेटिंग, मतलब ज़बरदस्ती मेरे को पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है. आई डोंट हैव एनी थिंग टू डू विद ऑल दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल. ओके. क्योंकि वो इतना बूढ़ा हो चुका है, उसकी कोई फैमिली नहीं है. ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ, नाउ ही वॉन्ट पीस इन हिज लाइफ. ओके. सो ही सेड दैट आई एम विदाउट पॉलिटिक्स. आई एम 76 years old. I have come 12 kilometers. Now he is telling his age. You have to remember this, that the old man was 76 years old and he had come 12 kilometers now. वो सैन कार्लोस से 12 किलोमीटर्स वॉक करके आया है. एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, कि अब उसमें हिम्मत नहीं कि वो आगे चल के जा सके. सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप. नाउ द नैरेटर इज सेइंग कि ये लेकिन सेफ जगह नहीं है रुकने के लिए. ओके. इफ़ यू कैन मेक इट, देर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोरटोसा. अब वो बोल रहे हैं आप कोशिश कीजिए, अगर आप उठ के थोड़ा आगे तक जा सकते हैं तो देर आर ट्रक्स, वहाँ पे ट्रक्स लगे हुए हैं जिस पे आप बैठकर टोरटोसा तक जा सकते हैं, जहाँ पे आप सेफ रहेंगे. ओके. सो ही इज सजेस्टिंग हिम टू लीव फॉर द ट्रक्स एंड सिट and go to Tortosa. Okay, so this is it for this class, and in the next class, today we are having two classes, so in the next period I'll explain the rest of the chapter and give you the notes. Thank you.